Good morning, students. Can you hear me? So, today we will start with the steps in the process of social research. So, there are 6 steps. That's what I'm discussing today. The first step, problem selection. That is the topic of the research. आपको एक संशोधनासाठी एक समस्या. So this problem is a research problem. I was trying to explain to you yesterday the difference between social problem and the researcher's problem. Okay. So when in the assignment I am asking you identify various problems of your neighborhood, prioritize them, explain them, select a problem for your research. Okay. So this is the first thing, you have to select a problem. And introduction, statement, formulation of the problem. Third one is rationale of the study. Fourth point is significance to social work. Last one is reference. Okay. So these 5 points in your assignment is all about the first point given in the slide. Problem selection. Topic for research. Now, इसके लिए मैंने एक example दे रहा हूँ. Now, I will give one example of a sample topic. Okay. A study on COVID-19 survivors and their families in just one example, Bahirbadi village. Okay. Nagar Taluka, Ahmad Nagar district. So I am just explaining your assignment with an example. Okay. I've given a sample topic, a study on COVID-19 survivors and their families in Bahirwadi village, Nagar Taluka, Ahmednagar district. देखो, this is a sample topic. इसमें एक प्रॉब्लम दिया है, स्टडी ऑन कोविड-19 सर्वाइवर्स, मतलब जो लोग कोविड-19 आया उन्होंने उसको ओवरकम किया, सर्वाइव किया. Those who successfully managed, overcome this crisis. This is a crisis everywhere. आपके घर में किसी को कोविड आया होगा, आप खुद को कोविड आया होगा, but you have survived. This is called COVID survivor and their families. Is it a social problem? This is not a social problem. We are talking about success stories, but it is a researcher's problem. Researcher has a problem there, wants to study how they have overcome, how did they manage, how did they face it, how did they get government assistance, any assistance from any other civil society organization. So how did they overcome the COVID pandemic? This is your study. So आपका गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, मे बी ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा students are facing problem. How the students are managing online education? How do the children cope up with online education platform? ये एक स्टडी का सब्जेक्ट हो सकता है. So there may be a social problem, but a researcher want to explore, investigate, study something, research. So that is researcher's problem. Okay. So you may identify all the problems in your village. Then identify one special problem for research. It can be something positive, something negative. Positive means how the people succeed, success stories. Negative means what are the problems? Suppose addiction, unemployment. You can study. Maybe farmer suicide. That is also a study. It is both a social problem
It is also researcher's problem. Okay. Now, this is finalizing a topic. If you have any questions, please write in the chat box. I'm always watching this chat box. I have a classroom assignment for you. Now, you tentatively decide a topic and write in the chat box. Then I will know you have understood how to develop a topic for your research. Okay? इसमें एक समस्या आना चाहिए, रिसर्चर्स प्रॉब्लम, एक जोग्राफिकल एरिया आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी मैंने लिखा है, स्टडी ऑन कोविड सर्वाइवर्स इन बाहिरवाड़ी विलेज। तीन एस्पेक्ट है, स्टडी है, कोविड सर्वाइवर्स है, दैट इज अ रिसर्चर्स प्रॉब्लम, देन अ जोग्राफिकल एरिया। सो प्लीज ऑल ऑफ यू राइट इन द चैट बॉक्स a probable topic. You need not finalize it. This can change. When you write your assignment, you may change it. But please write a topic for your research so that I can understand that you have understood what I was trying to tell you. Is that clear? समझ में आ रहा है? How to frame a topic for your research? Right? Can you hear me? Study on farmers problem in my village. Sagar, very good study. वो my village के जगह में आपका village का नाम डाल दीजिए। ग्रामीण भागात महिलांचा हंगामी रोजगार, ग्रामीण भागातील महिलांचा हंगामी रोजगार। इट्स अ गुड टॉपिक, लेकिन आपको है ना उसका रिफ्रेम करना पड़ेगा। स्टडी ऑन ग्रामीण, a study on महिलांचा हंगामी, a study on women's हंगामी, maybe okay. आपका गांव का नाम दे दीजिए, कोई तो गांव का नाम देना चाहिए। बाहिरवाडी गावातील, फिर ग्रामीण भाग नहीं चाहिए, गावातील महिलांचा हंगामी रोजगार एक अभ्यास आना चाहिए। ओके, that way, that is the title of your research. What about our youth? Yeah, you can write this, you can study about the youth, no problem. A study on youth coping with addiction to drugs and alcohol in Maligaon Taluka, Nasik. Perfect. Pooja, perfect topic. Topic is excellent. This is the way you have to frame a topic. A study, फिर एक प्रॉब्लम होना चाहिए, फिर एक जोग्राफिकल एरिया आना चाहिए। पूजा पवार, वेल डन। सो others are reading. I think you can get an idea how to frame a topic. Okay. Now, after framing the topic, there are three things. So one part of your assignment is ready. Framing a topic. You can change it, no problem. This is for assignment. आप इसी के ऊपर रिसर्च करना कोई जरूरत नहीं, असाइनमेंट लिखने के लिए टॉपिक लिया है आपने। देन सेकंड, आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रेलेवेंस टू rationale of the study. Then next one is relevance to social work. 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहले आपको लिखना है how this is a social worker's problem. अब मैं पूजा पवार का ये जो टॉपिक ले रहा हूं उसी के ऊपर बताता हूं। ओके, मैंने बताया है a study on youth coping with addiction to drugs and alcohol in Maligaon Taluka. So you have to mention their drug addiction, alcohol addiction, how this is a problem in the village. Okay, and how the youth is getting into addiction. Some are struggling it, some are coping it, some are trying to get out of it. So this is the researcher's problem. This is not simply studying alcoholic problem. You are studying how the youth manage their alcoholism, how they struggle, how it become a coping mechanism. Coping mechanism two way. How the drug addiction itself is a coping mechanism when they have unemployment, when they have a problem. We want to such, don't they?
Fact-finding research. You are searching why, how. Otherwise, there is a problem already. How these people are trying to come out of it. This is another dimension of this coping. Coping has two dimensions. One is there getting into alcoholism as a face saver, as a defense. So youth behavior with regard to alcoholism. So this is your, so explain that. Alcoholism is a problem at my village, at Maligaon Taluka, it is a widespread problem. And you can give some statistics, got some newspaper cutting, some magazines, some websites, some news report, some radio. This is come, whatever you refer, that comes in the reference section. Fifth point. See, first, second, and fifth point I have explained to you. आप जब प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, कुछ रेफरेंस देना है, कुछ डेफिनेशन देना है अल्कोहलिज्म का, ड्रग एडिक्शन का, कुछ स्टैटिस्टिक्स देना है, कितना लोग इसमें एडिक्ट हो गया है, और कोई वहां कोई डी एडिक्शन सेंटर होगा, वहां से डेटा मिलेगा, कितने लोग वहां ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, वो आप रेफरेंस में डालना पड़ेगा. Okay, so that is the second point. Now the third point, why you are interested, rationale of the study. Why have you chosen this topic? वहां आपको लिखना है, it is a problem in my neighborhood, in my relatives. Several of my relatives are my own friends, my own relatives, my cousins are addicted. I want to study, I want to help them. I'm personally involved. So this is personal reference, personal relevance. One point. This may be or may not be. Second is, it is widespread. Last year, several people got admitted into hospital. Maybe 2-3 people come with a suicide. They were alcoholic. So this is a growing problem in Nasik region. It is a problem in Maligaon. So you are telling contemporary relevance. Because of COVID, several young people lost their job. They directly came into addiction. This is called contemporary अनुकालिक प्रसक्ति. अभी आज ये समस्या है, बहुत प्रेसिंग प्रॉब्लम है. कोविड पैंडेमिक में बहुत सारे लोग, अगर उनको ड्रग नहीं मिला है, उसके घर में प्रॉब्लम हो गया है. So there is a contemporary relevance. You are talking about this is a problem in the village, problem in the community, problem in the district, problem in the taluka, problem in the state. Give some reference, some statistics. Uska bhi reference fifth point mein dena hai. So this is the third subtopic. It is a contemporary relevance. It is also personally relevant. My family mein hai, my friends, relatives are engaged, so I'm very much interested. So this is my personal problem. Related to, I'm personally interested, your personal interest. Second one is, it is contemporarily very relevant. This is the rational reason for selection. Why have we chosen? This is the third paragraph. Then the fourth paragraph, significance to social work. सोशल वर्कर इसके ऊपर काम क्यों करना चाहते हो? ये स्टडी सोशल वर्क के लिए क्या रेलेवेंस है? एक पैराग्राफ आपको लिखना है 100 शब्द में. वहां आप लिखोगे, social workers are working as de-addiction counselors. There is job opportunity for social workers. De-addiction, alcoholism is a field of social work. Therefore, this study is going to be very useful for social workers. As a social worker, I can improve my competence in counseling or dealing with this alcoholism. So this will add to the skills, techniques, practice, expertise of social worker. So this is a relevant topic for social worker. This is the fourth paragraph. Is that clear? Last is only reference. You have to give the name of the book, name of the newspaper, you give the name of the TV channel and the news, the time you listen to that, all the references, give 5-6 references in the fifth point. This is the first assignment. Is that clear?
Sir, do we need to like for this? Will it be like a tentative sort of thing that you are assuming इतने लोगों को ये issue है, or are you going to like a statistic basis कि मैंने ये लोगों को interview किया है और ये लोगों का ये response है ये issue के बारे में, and these many people have spoken that sort of thing? Is that something how it's supposed to be written? No, it is only imaginary. Don't go for data collection now. Don't conduct any interview. Don't interact anybody. Maximum you can go to reading something. Read some newspaper, read some website, internet. That statistics you can mention. Now I ended up going for direct data collection now. That comes later. आपको पांच असाइनमेंट है, वो फोर्थ और फिफ्थ में वो असाइनमेंट आएगा. अभी आपको सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसका रेलेवेंस बताना है. अभी फुंगसोरांग पूछ रहे हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. यू हैव टू डिस्क्राइब what you are going to study. I'm going to study about unemployment. I'm going to study about coping mechanism. I'm going to study about drug addiction. I'm going to study about COVID. You have to say that whether it is a social problem. All this is a social problem. Sometimes you want to study how the women are empowered through self-help group. This is not social problem, but this is social workers problem. We want to know how the people get into form SHE, then they start meeting regularly, they mutual help, mutual aid, they collect money, they help each other, they start some income generation program, they are getting empowered. How the women are getting empowered through self-help group. This is a researcher's problem. Fungsora, are you clear? So you have to describe your research problem. Okay. It can be social problem, or it can be only researcher's problem, not a social problem. It can be both. Okay. Yes. Now we can come back to the class now. Okay. So there are 6 steps. And coming to my topic, the first step is problem selection. मैंने आपको अभी उसके बारे में पूरा बता दिया. That is your assignment. Second step is research design. That research design is the second unit. वहां हम explain करेंगे. मतलब how we are going to conduct the research, synopsis, proposal. उसमें यूनिवर्स क्या होगा, सैम्पलिंग क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेथड्स यूज करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, कितना टाइम के लिए रिसर्च करना है, उसके चैप्टर प्लान क्या क्या होगा. 24 items are there. 24 items are there. Research design. तो हम नेक्स्ट यूनिट, हमारा यूनिट का टाइटल भी रिसर्च डिजाइन है, वहां हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके. सो second, you have to just know what is the second step. First, the topic is finalized. Second step is proposal writing, synopsis. रिसर्च कैसे करने वाला है वो आप लिखोगे. ओके, दैट इज द सेकंड स्टेप. इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेप, अगर प्लान तैयार हो गया, रिसर्च प्लान, सिनॉप्सिस तैयार हो गया, तीसरा लेवल क्या करना है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन. आपको गांव में जाना है, डेटा कलेक्शन करना है, माहिती गोळा करायची, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, तत्व संकलन, तथ्य संकलन. Whether I am speaking properly, but it is field investigation. This is the place you are different from the scientific researchers. Other place they are going to lab. कोविड के ऊपर रिसर्च करना है, पहले 2 स्टेप सेम है. प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीन डेवलप करना है. सेकंड में क्या है, प्लान बनाएंगे, हम रिसर्च लैब में कल्चर करेंगे, इसका कोविड का वायरस को कल्चर करेंगे, फिर इसके ऊपर हम रिसर्च करें, लैब में रिसर्च, लैब बेस्ड रिसर्च. दैट इज द नेचुरल साइंटिस्ट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, zoology,
They go to the lab and do their research. These social workers, our lab is field. हम समाज में जाएंगे, सामाजिक. So that is the third step is field investigation, data collection. Fourth step, data editing, data classification. एडिटिंग क्या है? आपने डेटा लेके आए हैं फील्ड से, उसमें कुछ करेक्शन होगा. कुछ लोग करेक्ट इनके सच नहीं बताया है, झूठ बोला है, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा. कुछ डरते उन्होंने टिक्स, आपको पता था इन्होंने कुछ अच्छा, इसका क्वेश्चनर में कुछ गलतियां है. देयर इज सम, आपने एक सवाल पूछा है, आर यू मैरिड? उन्हें बताया नॉट मैरिड. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? 5 चिल्ड्रन. आप लिखकर लेके आया, घर में आकर अरे शादी हुआ नहीं है तो 5 बच्चे कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है. शी माइट बी मैरिड. सो editing means thinking, reflecting on the data, correction the data. एक ने बताया आपका उम्र क्या है? उम्र 18 साल. आपका एजुकेशन क्या है? MA पॉलिटिकल साइंस. आपने लिखा जल्दी बाद में लिख लाया. बाद में सोचा 18 साल में MA कैसे कंप्लीट होगा? 18 साल में ग्रेजुएशन तो हो सकता है. कुछ तो गड़बड़ है. शायद उन्होंने एज सही नहीं बताया. दोबारा फोन करके पूछना है, आपका मुझे लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम, आपका एज क्या है? सच में बताइए. बताएंगे भाई 22 है. वो मैंने 18 वैसे बताया. सी कलेक्शन, एडिटिंग. जो डेटा आप फील्ड से लेके आते हैं, यू हैव टू curation. You have to make correction, and you have to classify social data, economic data, psychological data. वो आपका क्लासिफिकेशन कर सकते. दिस इज द फोर्थ स्टेप. सर क्लियर? फिफ्थ स्टेप, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? उसमें आपको टेबल, सारणीकरण, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. ये टेबल बनाते हैं, उसके ऊपर आप एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज द डेटा प्रोसेसिंग. दैट इज द फिफ्थ स्टेप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू. ये आपका रिसर्च में यही स्टेप फॉलो करना है. सो द फिफ्थ स्टेप इज एनालिसिस, सांकेतिकरण, या व्हाट टू से, उसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसमें टैबुलेशन, सारणीकरण आते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, विश्लेषण होता है, डेटा एनालिसिस, तथ्य विश्लेषण. ओके, देन रिपोर्ट राइट. लास्ट स्टेप क्या है? आपको थीसिस लिखना है. 100 पेज 150 पेज में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर वाइज आपको पूरा रिपोर्ट लिखोगे. दिस आर द 6 स्टेप्स. इज दैट क्लियर? सोशल रिसर्च का 6 स्टेप्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ आगे जाएंगे. Now this I have told you about social research. Now I am going to speak about social work research. इसमें फर्क है. This is सामाजिक संशोधन, दूसरा है सामाजिक कार्य संशोधन. very important question for you. समाज संशोधन आपको समझ में आ गया? प्रॉब्लम सिलेक्शन, RD, formulation of the planning, field investigation, data editing, data processing, रिपोर्ट राइटिंग. हो गया आपका सोशल रिसर्च. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल वर्क रिसर्च. सोशल वर्क रिसर्च क्या है? सोशल वर्क रिसर्च इज द एप्लीकेशन रिसर्च मेथड टू द प्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज दैट सोशल वर्कर्स नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट इन द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क. सोशल वर्कर जो रिसर्च करते हैं, उनका जो मेथड्स है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, उसका इंप्रूव करने के लिए, वो मेथड को इंप्रूव करने के लिए जो रिसर्च करते हैं, दैट इज द सोशल वर्क रिसर्च. इट इज प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट व्हाट इंटरवेंशन, व्हाट ट्रीटमेंट विल हेल्प द पीपल. Ultimately, it helps building knowledge base for social work theory and practice. सोशल वर्कर का प्रैक्टिस के लिए
उनका प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए उन्हें जो रिसर्च करते हैं उसको सोशल वर्क रिसर्च बोलते हैं। मेडिकल रिसर्च क्या है? वैक्सीनेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट करने का मेडिकल रिसर्च। अभी जो पूजा पवार का जो टॉपिक है कॉपिंग मैकेनिज्म, दैट इज सोशल, दैट कैन बी सोशल वर्क रिसर्च। वो नॉलेज सोशल वर्कर को बाद में यूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क रिसर्च? टू मेजर द नीड फॉर सर्विस। एक गांव में आपने सर्वे कर दिया, वहां कौन सा सर्विस जरूरत है, वहां आंगनवाड़ी का सर्विस चाहिए, वहां बचत गट बनाने का चाहिए, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कार्यक्रम चाहिए। ये सर्विस असेस करने के लिए आपको सोशल वर्क रिसर्च कर सकते हैं। टू मेजर सर्विसेज ऑफर्ड, अगर वहां आंगनवाड़ी चल रहे, कितना बढ़िया से चल रहे, एमजी नरेगा का स्कीम चल रहे, ये स्कीम कितना अच्छे से चल रहे, ये मेजर करने के लिए सोशल वर्क रिसर्च कर सकते हैं। इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ सोशल वर्क इंटरवेंशन। आपने वहां फील्ड वर्क कर रहे हैं, केस वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट है, कितना लोग उसमें फायदा हो गया, ये जानने के लिए आपको सोशल वर्क रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 4, एफिकेसी ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक। आप बता रहे मैंने तो केस वर्क कर रहे, ग्रुप वर्क कर रहे, कौन सा अच्छा टेक्निक है? मुझे लगता है ग्रुप वर्क ज्यादा फायदा का है। सो ये दो मेथड को कंपेयर करने के बाद कौन सा मेथड अच्छा होगा, ये सीखने, ये जांचने के लिए आपको सोशल वर्क रिसर्च करते हैं। लास्ट वन, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट मेथोडोलॉजी। सोशल एक्शन करते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, ये अलग अलग मेथड को कंपेयर करके कौन सा मेथड मोर सुटेबल होगा, दिस कैन बी, दिस इज व्हाट डॉक्टर डीके लाल has mentioned in his book प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च इन 2000, पेज नंबर 143। वो पेज से मैंने वैसे आपको रेफरेंस दिया है। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। स्टेप्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। Steps in social work research. देखो, identification of the problem same as the social research, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड पॉइंट, नीड असेसमेंट। कौन सा नीड, सोशल वर्क नीड क्या है? देन सिलेक्शन ऑफ सोशल वर्क रिसर्च डिजाइन। आपको डिजाइन सेलेक्ट करना है, सर्वे डिजाइन, क्वालिटेटिव डिजाइन और क्वांटिटेटिव डिजाइन, एक्शन रिसर्च। और ये अलग अलग रिसर्च का डिजाइन के बारे में है ना, हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूं। सर्वे डिजाइन क्या है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, पार्टिसिपेट, ये 6 तरीका सा डिजाइन होता है सोशल वर्क रिसर्च में। दिस इज सोशल वर्क रिसर्च। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट ए डिजाइन। थर्ड पॉइंट इज डिजाइन। ये डिजाइन सोशल रिसर्च में सेकंड पॉइंट में आया है। ओके, सोशल वर्क रिसर्च में थर्ड पॉइंट में आया है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? बेसलाइन स्टडी, प्री इंटरवेंशन डेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल वर्कर बेसलाइन स्टडी करते हैं, एक स्टडी करते हैं पहले, उसके बाद में देखो। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरवेंशन, सोशल वर्क इंटरवेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंटरवेंशन सोशल रिसर्च में नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वर्क इंटरवेंशन। क्या इंटरवेंशन हो सकता है? फील्ड वर्क हो सकता है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, ये सारे इंटरवेंशन आपको करना पड़ेगा सोशल वर्क रिसर्च। उसके बाद में क्या करोगे? असेसमेंट ऑफ द इंटरवेंशन। आपका इंटरवेंशन से क्या फायदा हो गया लोगों को? So that is the sixth step. This is very important for social work research. Last point is drawing inferences. उसी में आता है विश्लेषण, रिपोर्टिंग, सब कुछ ड्रॉइंग इन्फ्रेंस में आते हैं। ओके, and these are the 6 steps of or 7 steps of social work research. See how it is different from social research. Okay, now इसके डायग्राम के रूप में दिया है। Identification of the problem. When you get this question in the examination, this diagram is given by Dr. D.K. Laldas. Now I am mostly following his writings, okay, his suggestions, his book.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नीड असेसमेंट, मतलब सोशल वर्क करने का क्या नीड है वहां, ये आपको पहले असेस करना है. सोशल वर्क रिसर्च डिजाइन, प्री इंटरवेंशन डेटा, सोशल वर्क इंटरवेंशन, पोस्ट इंटरवेंशन डेटा, ड्राइंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस. इज दैट क्लियर? आपका कोई भी पॉइंट में एक्सप्लेन करना तो आप बताइए. टाइप्स एंड स्कोप ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, शायद ये पॉइंट, या नाउ देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च. ये भी एक पॉइंट भी आज कवर कर लेता हूं 2 मिनट में. सो सोशल वर्क रिसर्च कितनी प्रकार होता है. सबसे पहले है नीड असेसमेंट स्टडी. इस समाज में स्टडी करके बताएंगे इधर ओल्ड एज होम कम जरूरत है, वेलफेयर, सर्विस, डेवलपमेंट, एम्पावर, इधर महिला बचत कार्ड बनाने का आवश्यकता है, इधर ड्रग एडिक्शन के ऊपर काम करना जरूरत है. दिस इज नीड असेसमेंट. ऐसा स्टडी करने के लिए बोलते हैं नीड असेसमेंट स्टडी. सेकंड वन इज सिचुएशनल एनालिसिस. आपका सीनियर स्टडी किया है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन देयर विलेज. अभी सत्य स्थिति में कोविड इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर. कोविड के कारण क्या क्या प्रॉब्लम समाज में हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस. ये भी सोशल वर्क रिसर्च हो सकता है. सेकंड टाइप. थर्ड टाइप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन रिसर्च. ये क्या है, मतलब अगर एक प्रोग्राम चल रहे वहां, एमजी नरेगा चल रहे, इंदिरा आवास योजना चल रहे हैं, उसको इवैल्यूएशन करने के आपको स्टडी कर सकते हैं. दैट इज सोशल वर्क रिसर्च. इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आप स्कूल सर्व शिक्षा अभियान का इम्पैक्ट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, आदर्श गांव योजना, ये चल रहे प्रोग्राम, उस प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म होने के बाद आपको स्टडी करेंगे इसमें ये विलेज लोगों को क्या क्या फायदा मिला है. दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट. लास्ट वन इज पॉलिसी रिसर्च. अगर आप बता रहे देखो मेडिकल इंश्योरेंस सभी लोगों को मिलना चाहिए, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन. गवर्नमेंट अभी देखो कुछ दिन पहले, एक महीने पहले वैक्सीन प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट. 18 to 45 लोगों को पेमेंट करना पड़ा था. 150 रुपये, 250, 600, 1000, 2000, ऐसा वैक्सीन का रेट अलग अलग देश में, अलग अलग विलेज में, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट चल रहे थे. बाद में गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया, नो, government will procure and it will be given free. Vaccine will be free for all. This is a policy decision. ये policy decision के लिए कुछ सर्वे किया होगा, कुछ रिसर्च करते हैं लोगों, गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं. जो गवर्नमेंट को सजेशन देने वाला रिसर्च है बोलते हैं पॉलिसी रिसर्च. So that is the end of today's class. I don't want to continue further. At least 2-3 minutes are there for you for your questions.